Good morning, class. So, today we will start with the chapter GST again after a long break. So, I'll start with illustration number 2. As I told you, just watch out the previous video so that the concept related to GST will be clear to all of you. So, I'll start with the GST next illustration. It is number 2. It is intra-state or within the state GST. You need to pass out the journal entry assuming that the business entered within the state of West Bengal and the rate of GST is 6% each for CGST and SGST. So I'll start with the first one. As on 1st of April, purchase goods for rupee 1,50,000 from S. Banerjee. Here you purchase goods. So at the time of purchase, we pay GST. It is called input GST. So the journal entry is as on 1st of April, purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit. We purchase from S. Banerjee. So S. Banerjee. The amount of goods purchased is 1,50,000. The rate of GST is 6%. So 156% is 9,000 SGST and 9,000 CGST. So total amount due to Banerjee is 1,68,000. Second entry, sold goods for rupee 250 to Aditya. Here you sold goods, तो sales पर GST collect होता है. The journal entry is we sold goods on credit basis. Aditya debit to sales account. On the sales, when we collect the GST, it is called output CGST, and to output SGST. The amount of sales is 2,50,000. Its 6% is 15,000 CGST, 15 is SGST. Total amount due to Aditya is 2,80,000. Next is return goods to S. Banerjee for rupee 10,000. We purchase goods from Banerjee. Now we return goods to Banerjee. So purchase return is to be recorded in the credit side. So S. Banerjee debit to purchase return. If the return is in the credit, the GST is also recorded in the credit. Input CGST and to input SGST. The amount of return goods to Banerjee is 10,000 rupees. 6% is 600. 600 total is 11,200. The next entry is Aditya Sangwan return goods for rupee 8,000 to us. आदित्य को हमने सेल्स की थी तो उसने हमें रिटर्न किया है. इट इज़ कॉल्ड द सेल्स रिटर्न. सो जर्नल एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट to Aditya. The amount of goods returned by Aditya is of rupee 8,000. इसका 6% is 480. 480 total amount is 8,960. Next we have the expenses. Printing and stationery expense rupee 5,000 paid in cash. Expenses के ऊपर हम GST पे करेंगे. So it is my expense. Printing and stationery account debit, input CGST debit, input SGST debit. We paid such expenses in cash, so to cash account. The amount of expenses are 5,000. 6% is 300. 300 total is 5,600. Next we have goods withdrawn by proprietor for personal use. Here he withdraw the goods. अगर आपकी पर्सनल यूज़ कैश में होता है तो उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता. But here we withdraw some amount of goods for my personal use. The amount of such goods are rupee 20,000. So the journal entry is drawings account debit to purchase account. And if purchase is in the credit, GST is also in the credit. Input CGST to input SGST. The amount of goods are rupee 20,000. Its 6% is 1,200. 1,200. So total is 22,400. Next we have goods destroyed by fire rupee 15,000. Again, this is loss by fire in sense of goods. So the journal entry is
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमने जर्नल में स्पेशल एंट्रीज की थी. परचेज इन द क्रेडिट, so CGSTs and SGSTs also in the credit side. Input CGST and SGST. The amount of destroyed goods are rupee 15,000. Its 6% is 900. So total is 16,800. Now as per the last, you have to make payment of the balance of GST. तो GST की फाइनल पेमेंट करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट का टोटल करना होगा. Firstly, you need to find out the total amount of input CGST. Then find out input SGST. Then we need to find out output CGST. And the last is output SGST from all the entries from the beginning to the end. Like the first is with input CGST is 9,000. So 9,000 is CGST and 9 is the SGST. Next we have output CGST is 15 and 15. Output CGST 15, SGST is also 15. Next we have in the credit input. Input is in the credit. It means input में से minus करेंगे 600 because वो debit था और ये credit है. नेक्स्ट वी हैव आउटपुट इन द डेबिट 480 और फर्स्ट 80 आउटपुट क्रेडिट था, तो डेबिट वाला 480 इसमें से माइनस किया, आउटपुट में से बोथ. नेक्स्ट वी हैव इनपुट CGST. अगेन इनपुट इज इन द डेबिट साइड, तो इनपुट को इनपुट में प्लस करेंगे 300. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वन इनपुट इज इन द क्रेडिट साइड. अब ये क्रेडिट है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, माइनस 1200. And in the last also it is in the credit side, input as rupee 900, so it is also to be reduced 900 and 900. So this is the leftover amount of input CGST and SGST. So the amount of input CGST and SGST 6600 each, and for the output CGST is for 14,520, 14,520. अब इनपुट का मतलब ये हमने पे किया है और आउटपुट का मतलब ये हमने कलेक्ट किया है सेल से. नो वी नीड टू रेक्टिफाई द कलेक्शन फ्रॉम द पेमेंट. सो फर्स्टली द रेक्टिफाइंग एंट्री इज आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट CGST and to input SGST. Collection is 14,520 and the payment is 6,600. Still we have some amount left in the debit side, मतलब collection अभी भी मेरे पास बचा हुआ है पेमेंट को कवर अप करने के लिए, तो रेस्ट अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में. द बैलेंसिंग फिगर इज़ 15,840, क्योंकि जो हमने कलेक्ट किया है वो पेड GST से ज़्यादा है, तो जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज़ टू बी डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट एज GST पेड बाय द businessman. So this is about illustration number 2. Watch illustration number 4. Journalize the following transaction in the books of Kaveri Traders, Bengaluru. He is doing again business within the same state. So first is as on 15th. Purchase goods from Nagendra and Sons of Belgium of list price of 125 at 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price of goods. Paid CGST, SGST at the rate of 6% each. Payment was made immediately by check. तो यहाँ पर आपका trade और cash discount दोनों included है. So firstly, look at how we need to sort out this question. Find out the amount first. The total amount of purchase is 1,25,000. Firstly, find out its 20% trade discount. You know trade discount direct less होता है. It is 25,000. So 125 में से अगर मैं 25,000 का trade discount less करूँगी, the actual amount of purchase is 1 lakh rupee. Then they give 5% cash discount also and the rate of GST is 6% each. So journal entry for this is you purchase goods, purchase account debit, परचेज पर हम GST पे करते हैं
input CGST debit, input SGST debit. To, they said the payment is made by check to bank account and cash discount is there. तो discount account भी आपका credit में होगा because the cash is also, sorry, the bank is in the credit side. Now the amount of purchase is rupee 1 lakh. The rate of GST is 6% each, 6,000. Now please watch it carefully. अब जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ऑफ़र किया जाएगा कस्टमर को वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज़ पर होगा एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ GST. तो उसको हमने 1 लाख रुपीज़ की गुड्स उससे परचेज़ की थी, उसके ऊपर मुझे 5% का डिस्काउंट अरेंज होगा. इट इज़ रुपी 5,000. प्लीज़ रिमेंबर जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल और परचेज़ पर होगा. GST को इंक्लूड करके डिस्काउंट नहीं होगा कैश का. So the amount of discount is here 5,000. About the balancing figure, credit debit का total है आपका 112, credit में है 5,000, so it is 1,07,000 जो हमें पेमेंट की है बैंक से. The next is as on 20th, sold to Arvind Patil and Sons Company, Hubli goods list price है 4 lakh, 25% trade discount, 3% cash discount on the sales price. Again the rate of GST is 6%. फुल पेमेंट इज़ अगेन रिसीव्ड बाय चेक. यहाँ पर आपका सेल्स है इन स्पाइट ऑफ परचेज, तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी. फर्स्टली फाइंड आउट द अमाउंट. दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री. फॉर द सेकेंड एंट्री द अमाउंट ऑफ गुड्स इज़ रुपी 4 lakh. अगेन इट्स डिस्काउंट 25%, so 4 lakh 25% is 1 lakh. So after reducing trade discount the amount of sales is रुपी 3 lakh. जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इसकी हम. सेल्स की है तो ऑब्वियसली पैसा हम रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट में होगा टू सेल्स अकाउंट. और सेल्स पर आप GST कलेक्ट करोगे. आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. नाउ द अमाउंट ऑफ सेल्स इज रुपी 3 lakh. 6% is 18,000. And as I said you कि GST cash discount is always paid on the actual amount of sales or purchase. यहाँ पर आपकी rate of discount है 3% कैश का. So 3 lakh excluding the amount of GST हमें cash discount देना है या लेना है. So 3 lakh के ऊपर 3% it is 9,000. The rest amount is total it 336 minus 9,000 it is 3,27,000 which we deposit in the bank. Next one, sold to Begumpara and Brothers of Mysuru goods of list price 250, 20% trade discount, 4% cash discount. GST is 6% each and 80% of the amount received by check immediately. They paid only the amount 80%. Please remember we will give the amount of cash discount only to that customer या that person जो पेमेंट कर रहा है. Here 20% is not received, तो उसके ऊपर हम डिस्काउंट उसको अभी नहीं देंगे. तो डिस्काउंट आपका सिर्फ कैश पेमेंट पर होगा. So here firstly find out the amount. This is the second entry. Now we are doing the third one. Here the amount of goods are firstly 250. It's 20% trade discount. It is 50. So 250 minus 50. The actual amount of sales is 2 lakh. So firstly pass out the journal entry. We received some amount by check. 80% amount. So 80% के ऊपर हम उसको डिस्काउंट भी देंगे. जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. 20% अभी भी क्रेडिट में है. So you will write down the amount name of that person. To Bengaluru, to sales account, to output CGST, and to output SGST. Now find out the amount. Firstly, the actual amount of sales is 2 lakh. So we will write rupee 2 lakh in sales column. 6% is GST, so 2 lakh 12% is 12,000. It is also 12,000. Now he said कि he is paying the amount
80%, 2 लाख उसने हमने सेल्स की है 2 लाख की, उसको 2 लाख का वो सिर्फ 80% पे कर रहा है. 80% मीन्स 160. जो 160 वो पे कर रहा है, हम उसके ऊपर उसको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे. इट इज़ 4%. इट इज़ 6400. So the amount of discount is only 6400. 2 लाख का उसने 6400 का हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया बिकॉज ही इज़ पेइंग ओनली द 80% ऑफ द अमाउंट. सो टोटल अमाउंट जो उसने हमें पे करना है 2,24,000 एज पर दिस GST इंक्लूडिंग. सो 2,24,000 में से अभी हमें 20% उसने पे ऑफ नहीं किया. सो जो 20% उसने पे ऑफ नहीं किया, इट इज़ 44,800. So the rest amount is the balancing figure which he paid. It is 1,72,800. Once again, 2 lakh की total amount of sales थी, he is paying only 80%. So 80% है 160. इसी के ऊपर हम उसको सिर्फ कैश डिस्काउंट देंगे. It is 4%. 6400 is the amount of discount. अब टोटल हमें उस पर्सन से लेना है इंक्लूडिंग द GST 224 में से उसने अभी 20% पे नहीं किया, तो वो क्रेडिट में है उस पर्सन के नेम से 44,800. जो रेस्ट अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर वो आपकी बैंक से उसने पे कर दी. इट इज़ 172,800. नाउ यू हैव टू रेक्टिफाई द GST इनपुट विद द आउटपुट. सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जर्नल एंट्री. आउटपुट CGST डेबिट, output SGST debit, to input CGST, to input SGST, and the last balancing figure is to be paid by the bank to bank. तो यहाँ पर हमारी सिर्फ 3 ही जर्नल एंट्रीज थी, the first and second and the third one. So in the first one, input CGST is 6,000 and 6,000. So input is 6 and 6. In the second one, output is 18 and 18. So output is 18 and 18. And again in the third one, it is output is 12 and 12. So plus 12 and 12. It means in the debit it is total 30 and 36, 60,000. और क्रेडिट में आपका सिर्फ 12 है, तो रेस्ट 48,000 is to be paid in the central government account as GST paid by the businessman. Now we have some terms on which GST is not levied. Means in such situation GST is not to be charged by the businessman. First is amount introduced into the business as his capital, amount withdrawn by the businessman for personal use, amount deposited into bank, withdrawn from the bank, amount paid to creditors, and amount received from debtors and paid to the creditors. They are completely exempted from GST. Bad debts written off now recovered, payment of wages and salaries, payment of electricity and water bills, and payment of traveling expenses. Such amounts or such things are completely exempted from GST. On these things we will not charge or we will not collect any amount of GST. So that's all about today's work. Now आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है. नाउ वी विल डू अकाउंट्स वर्क डेली. आई एम सेंडिंग यू द वीडियोस रिलेटेड टू अकाउंट्स टॉपिक्स डेली. एंड BST का हम एक दिन स्किप करके वीडियो सेंड करूँगी मैं आपको, लेकिन अकाउंट्स का वर्क अब हम डेली करेंगे बिकॉज वी हैव टू वर्क हार्ड नाउ इन अकाउंट्स. सो जितना भी मैं वर्क आपको कराऊँगी वो डेली आपको उसको करना होगा सो दैट आपका पीछे का वर्क पेंडिंग ना हो. And we are doing little bit faster as compared to the previous video. So tomorrow in the next video I will complete the chapter this GST so that you will be able to cope up with the previous syllabus. Thank you and watch the videos carefully.